Assalamu alaikum. Hello and welcome to another video on Fakhre Wakalat. Today we are going to be discussing some tips and tricks for law admission tests. Whether you're an intermediate pass candidate or a graduate level student, these tips will definitely improve your skills and take you to the next level. So grab a notebook and pen, get comfortable, and let's dive in. The first question that we have is about what is the law admission test. The law admission test is an essential exam for students who have completed their intermediate studies and wish to pursue a professional degree in law and wants to become a lawyer or an advocate. It is designed to assess a candidate's aptitude and critical thinking skills as well as their knowledge of legal concepts and principles. The LAT is designed by HEC, and the students who pass the LAT and gain access to law school can look forward to a fulfilling and rewarding career with opportunities to work in various legal fields, including corporate law, criminal law, tax laws, family laws, and so on. So, we have the next question. How do I prepare for LAT? There are three P's of success: practice, practice, and practice. It is based on subjective and objective portion. Subjective part really needs practice. Practice for essay writing and practice for personal statement writing. You will have to write an essay or a personal statement in subjective portion. And in the objective part, you have to solve the MCQs portion of 75 marks. To pass this LAT exam, you have to develop a reading habit. First of all, you have to check the syllabus. Majority of students don't even try to check the syllabus. कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जो मटेरियल सोशल मीडिया या ग्रुप्स में फॉरवर्ड किया जाता है उसी को रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं. आप इतनी भी ज़हमत नहीं करते कि हम सिलेबस खोल कर देख लें कि सिलेबस में है क्या और एग्ज़ामिनर आपसे किस चीज़ की डिमांड कर रहा है. जब तक आप सिलेबस नहीं देखेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पेपर पैटर्न कैसा है और कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. सो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो द सिलेबस एंड डेवलप रीडिंग हैबिट्स. अपने अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़ हेडलाइंस देखें, ग्रामर बुक यूज़ करें, सिलेबस बुक्स देखें. जनरल नॉलेज के लिए आप अपनी बुक्स यूज़ करें. आपकी जो सिलेबस बुक्स हैं आप मैट्रिक की यूज़ कर सकते हैं, इंटर की यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप बीए पास हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो भी आप अपनी बुक्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं. अपनी एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ऐड करें और उन्हें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें. We have next portion, do's and don'ts. There are no hard and fast rules. You have to just follow the simple steps. Number 1, do not rely only the forward reading material. Number 2, do not blindly follow the social apps group study material. Number 3, try to use your syllabus books, especially English grammar books, Pakistan studies books, social studies books, maths and Islamiyat. Number 4, for the general knowledge portion, use to read news headlines, newspapers and use internet. And number 5 is for the essay and personal statement. Try to read your English paper B book portion. Do not rely on ready-made and outdated written material. Next we have essay writing. Essay writing is an art. How to write an essay, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हुई हूँ.
डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए। उसके बावजूद भी अगर आपका ऐसे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली essay writing is about to write an introduction, body and conclusion. You have to write a strong introduction, coherent body and balanced conclusion जो आपके ऐसे में जान डाल दे, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक फुल टाइम बैलेंस्ड हो, ये नहीं कि आपने इंट्रोडक्शन में कुछ और लिखा हो और कंक्लूजन में आप बिल्कुल ही ऑपोजिट जा रहे हो। नेक्स्ट वी हैव पर्सनल स्टेटमेंट। अ पर्सनल स्टेटमेंट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर ओपिनियन। अगर आपने लैट के पास पेपर्स देखे हों तो आपको आइडिया होगा कि पर्सनल स्टेटमेंट के लिए जो टॉपिक दिया जाता है उस पर आपका पर्सनल ओपिनियन मांगा जाता है, ना कि उस पर आपने एक ऐसे लिखना होता है। और आपका जो ओपिनियन होता है वो रियलिटी बेस्ड अपडेटेड मटेरियल पे बेस्ड करता है। जो आउटडेटेड बुक्स आप यूज़ कर रहे होते हैं, आप उनका मटेरियल अगर लिख कर आएंगे तो एग्ज़ामिनर कभी भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। पर्सनल स्टेटमेंट हैव इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, योर ओपिनियन, योर वर्क, योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द गिवन टॉपिक एंड फाइनली कंक्लूजन। ये 5 चीज़ें आपकी पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। रिमेंबर दीज 3 P's ऑफ सक्सेस। सो ये थी आज की हमारी लैट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि आपने क्या पढ़ना है और किसको अवॉइड करना है। Inshallah, in the next video, we will discuss how to register for LAT at HGCTC website. Last but not the least, Fakhre Wakalat Academy provides online classes for LAT. Group based classes भी होती हैं और individual classes भी दी जाती हैं. For online classes, you may use the admission form link to register at Fakhre Wakalat Academy. दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।